Bismillahirrahmanirrahim. This lecture is about the sodium chloride structure. So now we are actually talking about an actual crystal lattice, crystal structure. Previously we just assumed that these are some structures like simple cubic, body centered and face centered. But now we have the structure a real crystal sodium chloride at hand, which consists of sodium and chlorine ions. Of course, it's an ionic solid made by ions. Sodium positive ion, the chlorine is negative ion. You know that these ions are now stable just because of the complete octant. So they attract each other, and this attraction results their ionic bond, which makes sure that these are separated by a certain distance. And of course, that's actually the bond length. So if you want to calculate how many molecules, sodium chloride molecules are there in a unit cell, look at this crystal. This crystal, we have chlorine over here, and the sodium are just black dots, while the empty circles are chlorine ions. So if we see the one cell over here, this cubic cell, it contains sodium chloride, sodium chloride, sodium chloride, and sodium chloride. So we have 4 molecules of sodium chloride in a unit cell. The positions of these ions are, let's say we have set this point as an origin, then the sodium lies at along x-axis 1/2 of the distance this whole, while the other 2 axes are 0. Similarly, here one axis y is 1/2, x and z are 0, and here is also. So the third one lies over here. This coordinates 1/2 along z-axis, x and y both coordinates are 0. One is still pending, whose coordinates are yet to be determined, जिसके तीनों coordinates 1/2, 1/2 and 1/2 हैं. और इसी तरह से क्लोरीन एक 0 0 पे lie करता है. This one lies at 1/2 along z-axis, 1/2 along y-axis, and similarly half along x-axis, z-axis, and half along x-axis and half along y-axis. Yes. Yes, so we know the coordinates here and 4 molecules in one unit cell. अब इसी तरह से हम इसकी characteristics determine करेंगे जो previously हम बात करते आए हैं. Look at this crystal, just considering the chlorine atoms. Chlorine here, the corner atoms are chlorine, and also we have chlorine at each face. So the structure is face centered, and there are sodium atoms at the edges of the cube, and one is enclosed by this whole cube. So let's first see how many first nearest neighbors are there. As I said, this is just an origin. Origin से इस तरफ अगर मूव करते हैं तो 1/2 डिस्टेंस पे सोडियम आ रहा है along z axis, और इस तरह एक अपोजिट 1/2 डिस्टेंस पे सोडियम आ रहा होगा. y axis के लंग पॉजिटिव और नेगेटिव में, x axis के लंग पॉजिटिव और नेगेटिव में. So we have first nearest neighbor, 6 nearest neighbors of opposite kind.
आई मीन यहाँ क्लोरीन था तो उसके अपोजिट काइंड यानी सोडियम यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जो कि 6 नंबर ऑफ सोडियम एटम्स आर देयर। और अगर हम इनके डिस्टेंसेस की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स इट्स 1/2 ऑफ दिस टोटल डिस्टेंस। अगर टोटल डिस्टेंस को a कहा जाए तो ये a/2 डिस्टेंस पर लाई करता है। सेकेंड नियरेस्ट नेबर की बात करें तो सेकेंड नियरेस्ट नेबर इज दिस क्लोरीन एटम, जस्ट लाइक द फेस सेंटर्ड। सो क्लोरीन 6 nearest neighbor, chlorine atoms are 12, just like the face centered। इस y और z प्लेन में एक लाई करता है, इस तरह इसकी नेगेटिव प्लेन में, इस तरफ इसके दोनों की नेगेटिव में, और फिर एक पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में इस y और z प्लेन में 4 एटम वहाँ पे होंगे, 4 इसी तरह x z प्लेन में लाई करते होंगे, 4 y z x और y प्लेन में लाई करते होंगे। तो टोटल जो है वो 12 इसके सेकेंड नियरेस्ट नेबर्स हैं, एंड दे आर एट अ डिस्टेंस ऑफ a/2 जस्ट लाइक द face centered। We have calculated this a/2 square root distance। Now let's calculate that how many number of items are there in a complete unit cell. This complete unit cell, the formula already we have is Ni plus Nf/2 plus Nc/8 plus Ne/4, where Ni stands for the number of lattice points completely enclosed by this cube, and F is the number of atoms at the faces of the cube, and Nc stands for the number of atoms at the corner of our cube, while this Ne is the number of atoms at the edge of the cube। इस केस में हमारे पास yes we do have one atom enclosed। लेट्स सी कि हम इसमें ना लेट्स कैलकुलेट देम इंडिविजुअली। फर्स्ट हम क्लोरीन के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम सोडियम के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो क्लोरीन के केस में अगर हम यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सी कि क्लोरीन एटम के लिए हम Cl माइनस कैलकुलेट करते हैं। हाउ मेनी क्लोरीन एटम्स आर देयर? वी हैव one atom at each corner of the cube, so there are 8 corners, 4 इस तरफ और 4 इस तरफ, so 8/8 corners के साथ आ गया। फेस सेंटर्ड पे हमारे पास एक एक मौजूद है, 6 फेसेस हैं, so 6 यहाँ से आ गए। then we have chlorine atoms। there is no chlorine atom at the edge and no chlorine atom completely enclosed by this cube। So 8 multiplied by 1/8 plus 6 multiplied by 1/2, ये जस्ट दो फैक्टर, ये यहाँ के दो पैरामीटर्स ही सरवाइव कर रहे हैं, ये वाले इन केस ऑफ क्लोरीन एटम। तो हमारे पास ये क्लोरीन के टोटल 4 जो है ना वो आइटम्स आ गए हैं। अब अगर हम सोडियम की बात करते हैं Na+ की, तो Na+ के केस में यहाँ अगर क्रिस्टल को देखा जाए तो देयर इज सोडियम enclosed, one atom enclosed by this cube, so Ni is equal to 1। सोडियम के केस में ये 1 हो गया, प्लस there is no atom at the face of this cube for a sodium plus ion, so this Nf is 0, Nc similarly is 0, but this Ne is still there। Ne ये यहाँ का एटम है, यहाँ का आयन है, और इसी तरह इस एज पे भी एक लाई करता है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 edges are there, so 12 number of atom sodium ions are there at the edge। यहाँ पे अगर हम 12 प्लग करते हैं तो 12 divided by 4 is 3 plus 1 4, so सोडियम एटम भी इसी तरह से हमारे पास 4 हैं, जैसे क्लोरीन के 4 एटम आए थे। क्लोरीन के भी 4 हैं इसी तरह, और सोडियम के भी हमारे पास
चार एटम है, चार आइंस है ऑफ कोर्स। अब हम कैलकुलेट करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन में हम अगर देखें तो जो डिस्टेंस है वो हमारे पास ये सोडियम और क्लोराइड दोनों के समेशन से निकल रहा है, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो एटम की तादाद है या लेटेस्ट पॉइंट की टोटल तादाद है सोडियम और क्लोराइड दोनों को मिला के बनाई गई। चार इसके हैं और चार सोडियम के हैं, चार क्लोरीन के हैं। सो टोटल नंबर ऑफ net and effective multiplied by volume of each atom. This volume of each atom now is not just because of one atom. Now we have two atoms of different kind. So this volume should be sum of those two different kinds of atoms volume. 4 by 3 pi Na cube plus 4 by 3 pi NaCl cube. Pi r Cl cube. This radius Cl is for the chlorine and R Na stands for the radius of sodium ion, right? And of course this A is the sum of these two radiuses. Yes, iska radius plus sodium ka radius, then we have this A cube, and ultimately we have the total volume of R cube. This will be the packing fraction of our structure. That's all about sodium chloride structure. Thank you.